Today we can start the topic limit continuity and uniform continuity and related concepts about complex analysis. Firstly, we can define the limit of a complex number. Definition 1. Definition 1. Limit of f of z. A function f of z is said to tend to a limit L if given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 is said to a limit L as z tends to a. ये भी साथ में लिखेंगे as z tends to a. If given epsilon greater than 0, there is delta greater than 0 such that mod f of z minus L less than epsilon whenever 0 less than mod z minus a less than delta. ये definition है limit of complex quotient. We can write it as limit z tends to a f of z equals to L or f of z limit z tends to a f of z equals to L or f of z tends to L as z tends to a. Next, definition 2, we can define the continuity in complex analysis. Continuity of f of z. A function f of z is called a continuous at z equals to a, at z equals to a if given epsilon greater than 0, there is delta greater than 0 such that mod f of z minus f of a less than epsilon whenever mod of z minus a less than delta. ये हमारे पास continuity f of z की definition है. Function f of z continuous होगा at z equal to a if given epsilon greater than 0, there is delta greater than 0. The value of delta depends on epsilon and points of the domain or region such that mod f of z minus f of a less than epsilon whenever mod z minus a less than delta. We can write it as f of z tends to f of a as z tends to a or limit z approaches to a f of z f of a. Next, another one definition is uniform continuity. Uniform continuity of f of z. A function f of z is said to be uniform continuous at uniform continuous in a region R if given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of z1
minus f of z2 less than epsilon whenever mod of z1 minus z2 less than delta for all z1 z2 belongs to region R। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है हमारे पास। ए फंक्शन f of z is said to be uniform continuous in a region R if given epsilon greater than 0 there is delta greater than 0 such that mod f of z1 minus f of z2 less than epsilon whenever z1 minus z2 का absolute value less than delta z1 z2 complex number है region R। Next another one definition is limit at infinity। limit at infinity definition 4 limit at infinity। limit at infinity स्टडी करने से पहले every uniform continuous map is a continuous map and every continuous map is not a uniform continuous। continuous map on the closed region is uniformly continuous। In case of uniform continuity, the value of delta depends only on epsilon but not on the points of its region or domain। But in case of continuity, the value of delta depends both points of the region and epsilon। Second, another point is uniform continuity is associated in a region or some domain। Uniform continuity is associated in a region or whereas continuity is associated at a point in the domain of region or। Next, limit at infinity। limit at infinity इसमें एक डेफिनेशन है फर्स्ट वन ए फंक्शन f of z is said to tend to a limit L as z tends to infinity if इसको infinity पढ़ेंगे z tends to infinity if given epsilon greater than 0 there exists capital R positive number लेंगे greater than 0 such that क्या हो जाएगा mod f of z minus L less than epsilon होगा whenever mod z greater than capital R। we can write it as limit z approaches to infinity f of z equals to L। ये limit at infinity one kind है। second kind limit at infinity की second kind a function f of z is said to tend to infinity is said to tend to infinity as z tends to point A if for every capital M greater than 0 capital M we can find a positive number there exists delta greater than 0 such that mod of f of z is greater than capital M whenever 0 is less than mod z minus a which is less than delta। We can write
it as limit z approaches to a f of z equals to infinity. We can write it as limit z to f of z equals to infinity. Another one definition है. Next, third kind is a function f of z is said to tend to infinity को टेंड करेगा if for given capital M greater than 0, there exists capital M greater than 0 such that a function f of z is said to tend to infinity as यहाँ लिख देंगे as z tends to infinity, z भी infinity को टेंड करेगा if for given a capital M greater than 0, there exists capital M greater than 0, capital M 2 positive number find करेंगे such that mod f of z greater than capital M होगा whenever mod z greater than capital M. We can write it as limit z approaches to infinity f of z equals to z. ये हमने स्टडी किया लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर f of z, limit of complex number at z equal to infinity, continuity and uniform continuity. ये कुछ concepts है complex number. Now we have to study some problems of complex number. Exercise in first लेते हैं. Find limit z tend to 0 z bar by z. इसी तरह से दूसरी है limit z tend to 0 z by z bar. ये एक्सरसाइज है और इसकी लिमिट फाइंड करें और इन अदर वर्ड्स में कंटिन्यूटी भी इसकी चेक कर सकते हैं. लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करती है. तो ये सेकंड है. कोई एक करते हैं दोनों सिमिलर पार्ट. फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन वी हैव हमारे पास है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z बार में z. हमने इसकी लिमिट कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट स्टडी की, लिमिट एट इंफिनिटी स्टडी की हमने, कंटिन्यूटी स्टडी की, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. आप इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं लेट z कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन और गॉसियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है. रियल एक्सिस के अलावा रियल वैल्यू लाई करती है, इमेजिनरी एक्सिस के अलावा इमेजिनरी यूनिट्स लाई करती है. लेट z टेंड्स टू 0 along रियल एक्सिस. रियल एक्सिस बोलेंगे x एक्सिस को, दैट इज x एक्सिस. सो दैट z 0 को अप्रोच करेगा x एक्सिस, सो दैट y 0 होगा as x 0 को अप्रोच करेगा. देन z की बात करेंगे हम, z होगा x प्लस आयोटा y, x निकल जाएगा. एंड z बार फाइंड करते हैं, ये होगा x माइनस आयोटा y, x निकलेगा. z बार हो गया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z का और x माइनस आयोटा y, y की वैल्यू 0 है, x आ जाएगा. Therefore limit z approaches to 0 z bar by z, लिमिट x 0 को अप्रोच करेगी,
z बार की वैल्यू निकाली x बाय z की वैल्यू x, ये कैंसिल 1 कांस्टेंट है, उसकी लिमिट कांस्टेंट हो, इट्स 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका करेंगे along इमेजिनरी एक्सिस। इसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की दोनों की लिमिट कोइंसाइड्स करेंगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंट लिमिट निकलेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रॉब्लम लिमिट्स आर टेंड टू 0 z बार का z। देखिए नेक्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं z टेंड्स टू 0 along imaginary axis that is y axis के along 10, y axis के along x 0 होगा as y approaches to 0, therefore z होगा x plus iota y और x 0 it is iota y। z बार की बात करते हैं x minus iota y, x 0 है ये minus iota y निकल जाएगा। therefore limit z approaches to 0, z बार में z फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करते हैं हम limit y approaches to 0 होगी, अब इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस के अलग बात करें तो z बार हमारे पास क्या है माइनस आयोटा y, z की वैल्यू आयोटा y, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगी लिमिट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट रियल इमेजिनरी एक्सिस की दोनों की लिमिट जो है वो डिस्टिंक्ट होगी, डिफरेंट, एक 1 है दूसरी -1, तो वी गेट लिमिट z टेंड टू 0 z बार बाय z डज नॉट एग्जिस्ट, और ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। दोनों डिफरेंट लिमिट आई, इसकी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सेम होती तो कोइंसाइड कर देती, फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करती। सिमिलर लिमिट z टेंड टू 0 z बाय z बार आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। One more exercise. हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमारे पास फंक्शन है f of z इक्वल टू z बार एट z इक्वल टू 0 पर। इसकी हमने डेरिवेशन चेक करनी है, डिफरेंशिएबल है ये z इक्वल टू 0 का या नहीं है, ये बात चेक करनी है। इसके लिए फार्मूला है हमारे पास f डैश ऑफ z होता है लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 f of z प्लस डेल्टा z माइनस f of z बाय डेल्टा z, ये फार्मूला। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वी हैव f of z इक्वल टू z बार एट z इक्वल टू 0, therefore f डैश ऑफ z, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा z 0 को अप्रोच करेंगे f of z प्लस डेल्टा z, तो ये आएगा z प्लस डेल्टा z का बार माइनस f of z, इट इज z बार, डिनोमिनेटर में डेल्टा z मिला है। ये किसके इक्वल होगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0
conjugate of the sum of two complex number, sum of their conjugates, z bar डेल्टा z का बार माइनस z बार, डिनोमिनेटर डेल्टा z, इसी को फाइंड आउट करेंगे। लिमिट डेल्टा z 0, ये प्लस की टर्म ये माइनस की कैंसिल, डेल्टा z बार बाय डेल्टा z, टेक इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको फाइंड करेंगे। लेट करेंगे डेल्टा z approaches to 0 along real axis, so that real axis बोलते हैं axis, डेल्टा y 0 होगा as डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा। ये सारा डेरिवेटिव f डैश ऑफ z किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा। यहां डेल्टा z बार एक्चुअली डेल्टा z बार होगा डेल्टा x माइनस योटा डेल्टा y के इक्वल, और डेल्टा z किसके इक्वल होगा, ये होगा डेल्टा x प्लस योटा डेल्टा y के इक्वल। डेल्टा y की वैल्यू है 0 करो तो ये आएगी टर्म डेल्टा x बाय डेल्टा x, ये इवैल्यूएट होके बन आ जाएगा। नेक्स्ट इमेजिनरी एक्सिस के नाम बात करते हैं। लेट करते हैं डेल्टा z, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। लेट डेल्टा z approaches to 0 along imaginary axis के नाम, so that डेल्टा y 0 होगा as डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा। This implies f dash of z लिमिट डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगी। सिमिलर वैल्यू डेल्टा z बार होगा डेल्टा इमेजिनरी एक्सिस के नाम डेल्टा x 0 as डेल्टा y equals to 0, तो लिमिट डेल्टा y equals to 0, यहां डेल्टा x को 0 पुट कर लेंगे, ये आएगा माइनस योटा डेल्टा y, डिनोमिनेटर में अयोटा डेल्टा y, ये कैंसिल होके माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3 दोनों से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we get f of z equal to z bar is not differentiable, ये differentiable नहीं है at z equal to 0 पर, because दोनों एक्सिस के along different लिमिट है, एक के along 1 और दूसरा -1। थैंक यू।